और आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी अब अपनी पहली सूची के बाद दूसरी सूची उसने जारी कर दी है। बीजेपी की दूसरी जो लिस्ट है उसमें 72 नामों की घोषणा हुई है, जिसमें कई सीनियर नेताओं के नाम भी शामिल हैं। बीजेपी ने गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हिमाचल, दिल्ली और उत्तराखंड के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। बीजेपी की दूसरे लिस्ट में सबसे बड़ा नाम जो है वो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का है। बीजेपी ने एक बार फिर उन्हें नागपुर से टिकट दिया है। इसके साथ ही पीयूष गोयल को मुंबई 9 से मैदान में उतारा गया है। If we talk about Haryana first, let's go state by state. Manohar Lal Khattar, who resigned as the Chief Minister of Haryana yesterday, he has been fielded from Karnal, and it's a big name that has come up. Sunita Duggal, who has been very vocal when it comes to the Sandesh Khaili violence, she was a part of team of the BJP who went over there as a fact-finding team. She has also been replaced. Now, big surprises have come from Delhi. Now, for benefit of viewers, 6 out of 7 MPs in Delhi, sitting MPs in Delhi. तो बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी होने के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। किन किन लोगों ने प्रतिक्रियाएं जाहिर की हैं, सुनिए। The first list of BJP in Karnataka and second list in all over India has been released today, and it's a combination of both experience and youth. And when we look into the list, there are high performance people who have got experience, as well as there are new faces where they have got all the energy to work with Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. And under the leadership of Narendra Modi ji, I am sure that people of Karnataka will give 28 out of 28 seats. So all these things were expected, and what has happened, I think, is what we've been all speculating. Speculation is going on. So it is left to them to go nominate whoever they want to.